Good morning. This is Imran al Haq with a new reading video, and today you can see it is book 19, test 2, and reading passage 3, an inquiry into the existence of the gifted childhood. Okay, let's see the questions. Okay, first of all, yes, now this the completing summary with the word bank. Even you can say below, yeah, the word bank is given. You will have to choose the answer from the text and choose its alternative from the word bank, that is the true question. Okay, and write down the alphabets, not the words. Okay, so this is the technique or the action plan of this reading passage. Okay, so we'll read out first of all. Maryam Mirzakhani. Sorry, Maryam Mirzakhani is regarded, वो समझी जाती थी, is considered in the field of mathematics, in the area of mathematics. Okay, she was considered something in the field of mathematics because she was the only female holder the prestigious field medals. Okay, prestigious field medal is the keyword. Even the Mirzakhani, that one is also proper noun and keyword. Let's see where the keyword is given. Okay, we find out she is regarded as in the field of mathematics. Okay, so you see Mirzakhani is here. Okay, who died at the early age of 40. She was the only woman to win the field medal. You see this one. Okay, so now let us start by looking at a modern genius. Yes, modern genius. She is considered as modern genius. So write down modern genius. Now pick out the synonym of the genius from the word bank given below. Appeal, single, innovative, satisfaction. Now determined, achievement, unique. Yes, genius, unique. Okay, write down age. Yes. The next thing, okay, you can say Maryam Mirza Khani is regarded as in the field of mathematics. You can see here. Let us start by looking at the modern genius. She is modern genius. Okay, Mirza Khani. Okay, the mathematical equivalent of the Nobel Prize. She got also field medal. Okay, so she's genius. The next thing is, okay, uh, a record that she retained at the time of her death. However, math had little for her as a child. Okay, math had little as a child. When she was little, math had little for her. So what? Let's see what did little had for her. Mirza Khani must that child but in specific, but looking closer in different emerging. Mirza Khani born, yes, you can say this one. Mirza Khani was born in Tehran when she was little. She went to high selective schools, but maths was not her interest. Yes, you can say was not her interest. Was not her interest means she had little interest. Okay, she had little interest. Okay, we see appeal. So you see appeal, yes, appeal, interest is appeal, so A is there. Okay, this one. Now you can say, however, math had little for her. Math had little interest or appeal for her. For as a child, in fact, her performance was below average. Her performance was not accurate, up to date. You can say below average until she was by difficult puzzle that one of her siblings, brother or sisters, you can say. Okay, these are the keywords. We will check down these keywords. Okay, उसकी परफॉर्मेंस बहुत एवरेज थी जब तक कि कोई डिफिकल्ट पजल जो थी, जो उसके बहन और भाई ने उसको दिखाई तब तक, ठीक है जी। फिर उसकी इंटरेस्ट जो थी वो बढ़ गई. So we will see his brother or sister. Okay, as a math she did rather poor. Yes, you can say her performance was not accurate. Okay, her performance was not up to the mark here, rather poorly, and you can say average. Performance was below average until she was, okay, at it for the first couple of years in the middle school, but became interested वो interested हो गई when her elder brother told her about what he had learned.
What his brother had learned. When he told him about his learning, she became interested in mathematics. He shared famous maths problem. He shared famous math problem with her from the magazine that fascinated her, that arrested her attention. That arrested her attention. Now see, that is the puzzle in the magazine, given in the magazine, in create curiosity in Maria Mirzakhani. Okay, fascinated her. So fascinated her, you can see, fascinated her. See this, appealing, it is done, appeal is done, unique is done, single, involved, no, determination, achievement, intent, yes, intrigued. You see, intrigued, fascinated, intrigued. So this one is given in C. Okay, so fascinated means intrigued. Even you can say interested means also interested, also intrigued, create some kind of curiosity. Okay, so the next thing. Okay, later, as a professional mathematician, she had an inquiring mind and proved herself to be. Okay, later, as a professional, when she became a professional mathematician, okay, she had an inquiring mind. Now she started getting things. Okay, she showed her curiosity and proved herself, and she proved herself to be something when things didn't go smoothly, when didn't favor him. Okay, she proved herself to be. So what did she prove herself to be? Let's see. Now see, in later life, in adult life. Now see, in later, as a professional mathematician, she proved herself to be. Okay, we'll check what did she prove herself to be. Sorry, it is clear she was curious. Yes, she was curious, you can say, inquiring mind. Okay, excited by what she did, and has resolute and did not. Okay, and sorry, that she was curious, excited. She was curious and excited, but what she did, by what she did, and what she did, she was curious and excited about that, and also resolute in the face of setbacks, you can see, in the face of setbacks. Okay, in the duration of problems. Okay, when the time didn't you say, didn't go smoothly for you, didn't go smoothly means you face setbacks, and what you do, and also resolute, and you are resolute, so you can see. And later, as a professional mathematician, she had an inquiring mind and proved herself to be resolute. Okay, resolute means steadfast. Okay, steadfast means कि डटे रहने वाला, कायम रहने वाला, पुख्ता इरादे वाला. Okay, yes, determined, you can say B. Okay, write down determined here, B. Yes, this one. Next thing, she said she got the greatest. Okay, from making groundbreaking discoveries. Okay, groundbreaking discoveries. Okay, we'll check. So she said she got the greatest. She what she got the greatest from making groundbreaking discoveries. When she make discoveries, groundbreaking prominent discoveries, what she does. Okay, so we'll check. Okay. one of her comment one of her comment sums it up. One of her comment sums up. She said, she is commenting now. She commented, she got the greatest. Okay, she comments, she one of her comments sum it up. Of course, the most rewarding part is the aha moment. Aha moment means he is feeling some kind of satisfaction, some kind of contentment here. Aha moment, the excitement of the discovery, and that aha moment is the excitement of that discovery and enjoyment of the understanding something new. Okay, that was the aha moment. Okay, that was the excitement. Okay, of what she discovered and what she understood something new, and that was the enjoyment of all these circumstances. So aha moment. Okay, so we'll check. Yes, you can see this one, single, involved, satisfaction,
Okay, satisfaction. Yes, you can see satisfaction. Aha moment is a satisfaction. So write down G here. Okay, the next thing. And in fact, she was responsible. She was responsible. She was responsible for some extremely mathematical studies. Try to underline all these words, which are clue words which you think can be helpful in finding out the answers. But most of the time, doing mathematics for me is like being on a long hike with no trail. So when she was on her mathematics research, sometimes she think that she is doing something, a long hike, a long adventurous walk, you can say, and no end in sight, and she didn't see any kind of objective or goal of that research. That trial, that the problematic period took her to the heights of original research, took her to the heights of original research. ये ट्रायल जो था, ये प्रॉब्लम जो वो फेस करती थी, वो मैथमेटिक्स में उसको हाइट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च में ले जाती थी. ठीक है जी. तो हम देखते हैं जी यहाँ पे शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ओरिजिनल रिसर्च, हाइट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च सी यहाँ पे. तो हम देखते हैं ओरिजिनल रिसर्च जो है वो सिंगल इन्वॉल्व्ड अचीवमेंट ओके, intent. Yes, intent. This one is what you call, what was our original okay, unique, intent, devoted, no, innovative research. Yes, you can say innovative research. So try to understand first, okay, the true synonym and the true sense giver word, then mark it, okay, then put it in the blanks. Okay, so this one. So let's move toward the next question. Next question, you can say true false and not given. We'll check true false and not given. When the information agrees, it is yes. When it contradicts, no. Not given means the information is not given. Many people who ended up winning prestigious intellectual prizes only reached an average standard when young. Okay, many people on winning prestigious intellectual prizes reached only average standard when they were young. Okay, so underline these, all these words. Okay, we'll check this. In her background unusual, apparently not. Most Nobel Prize winners were unexceptional. Most Nobel Prize winners, you can say, most people who ended up winning, okay, ended up winning, this is the same matching, okay, were unexceptional in childhood. They were unexceptional. They were unexceptional. Okay, obtaining prestigious intellectual prizes. Those people who won prestigious intellectual prizes only reach average standard. Average standard when young. You see, this average standard means they were unexceptional. Okay, so when young in childhood, so this is totally matching. Okay, so this one you can say, okay, most Nobel Prize winners were अनएक्सेप्शनल इन चाइल्डहुड. तो वो अनएक्सेप्शनल थे. ठीक है जी, एक्सेप्शनल नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे चाइल्डहुड में, बल्कि अनएक्सेप्शनल थे. तो यहाँ पे भी ये लिखा कि एवरेज स्टैंडर्ड थे, वो एक्सेप्शनल नहीं थे. तो इसका मतलब है कि ये यस होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो मैच कर रही है. आइंस्टाइन्स फेलियर्स एज अ यंग मैन वर ड्यू टू हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. जी, आइंस्टाइन को जो फेलियर्स हुए थे, नाकामियां हुई थी एज अ यंग मैन, एक नौजवान के तौर पे, वर ड्यू टू हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हुई थी. जी, तो हम देखते हैं, ये साथ ही है. आइंस्टाइन वॉज स्लो टू टॉक एज अ बेबी. जब वो बेबी था तो वो आहिस्ता बोलता था. ही फेल्ड द जनरल पार्ट ऑफ द एंट्री टेस्ट टू ज्यूरिक पॉलिटेक्निक, दो दे लेट हिम इन. उन्होंने उसको आने दिया. एंड ही गॉट एडमिशन बिकॉज हिज बैकग्राउंड इन फिजिक्स एंड मैथ वर वेरी हाई. ओके, okay, and he struggled at work initially. In the beginning, he struggled in his work, but he kept plugging away and eventually rewrote the laws of Newton.
mechanics. Okay, you see, we didn't say Einstein's failures as a young man were due to lack of confidence. Okay, nowhere mentioned that lack of confidence he failed. Okay, but if we see here, Einstein was slow to talk as a baby. वो बोलने में आहिस्ता था, ठीक है जी. ही फील्ड द, ये इसको एक सेपरेट के तौर पे भी ले लिया जाए, इसको एक सेपरेट के तौर पे भी ले लिया जाए, ठीक है जी, और इसको एक सेपरेट के तौर पे भी ले लिया जाए, तो फिर भी हम देखते हैं कि ये नॉट गिवन के जिम्मे में आता है, ठीक है जी, ये नॉट गिवन के जिम्मे में आता है, ठीक है जी. हम देखते हैं जी. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे पास है, इट इज डिफिकल्ट टू रीच अग्रीमेंट, इट इज डिफिकल्ट टू रीच अग्रीमेंट ऑन वेदर सम चिल्ड्रन आर एक्चुअली बोर्न गिफ्टेड. ये किसी अग्रीमेंट पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है कि जो कुछ बच्चे हैं वो पैदाइशी तौर पर ही गिफ्टेड पैदा होते हैं. हम देखते हैं जी यहाँ पे, यस, while the jury is out, now you see, while the jury is out, तो जो लोग हैं, साइंसदान हैं, ठीक है, वो आउट हैं, वो बाहर हैं, इस चीज पर अभी अग्री नहीं हुए, बल्कि वो इस चीज की तलाश में है. किसकी तलाश में? ऑन गिफ्टेडनेस, गिफ्टेडनेस की तलाश में, बीइंग इनेट, कि क्या ये पैदाइशी होती है, ठीक है जी. तो क्या ज्यूरी जो है, लोग जो हैं, साइंसदान जो हैं, वो गिफ्टेडनेस पर जो पैदाइशी होती है उस पर अभी, उस पर आउट हैं, बाहर हैं, काम कर रहे हैं, उस पर अग्री नहीं है. तो ये क्या कहता है? कहता है जी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच. जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो कह रहा है कि ये ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है जी. जी, तो ये आप देख लें कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच ऑन अग्रीमेंट वेदर सम चिल्ड्रन आर एक्चुअली बोर्न गिफ्टेड. तो इस अग्रीमेंट पर, इस बात पर पहुंचना मुश्किल है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बाय बर्थ ही गिफ्टेड होते हैं. तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वो कहता है कि ज्यूरी अभी तक इस पे आउट है, अग्रीमेंट नहीं हुआ कि गिफ्टेडनेस जो है वो इनेट है, बाय बर्थ है, एंड अदर फैक्टर्स पोटेंशियली मेकिंग द डिफरेंस, और दूसरे फैक्टर जो हैं वो भी कुछ फ़र्क जो है वो डालते हैं. What is certain is that, हकीकत ये है that the behavior is associated with the high level of performance and replicable, कि वो रवैये जो हाई परफॉर्मेंस जो है उससे मुंसलिक होते हैं, उनको कॉपी किया जा सकता है, एंड मोस्ट कैन बी टॉट, और कुछ को पढ़ाया भी जा सकता है, इवन ट्रेड्स सच एज क्यूरोसिटी. तो वो कहता है कि हाई लेवल की परफॉर्मेंस जो है ना उसको रेप्लिकेबल भी किया जा सकता है, एंड कैन बी टॉट, और पढ़ाया भी जा सकता है. इसका मतलब है कि ज्यूरी अभी तक ऑन है गिफ्टेडनेस, कि गिफ्टेडनेस जो है वो बाय बर्थ है, तो अभी तक अग्री नहीं हुआ, तो ये हमारे पास यस होगा. नेक्स्ट है हमारे पास, आइंस्टाइन वॉज अपसेट बाय द पब्लिक व्यू ऑफ हिज लाइफ्स वर्क. ठीक है जी, हम देखते हैं जी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आइंस्टाइन को हमने पढ़ा था, आइंस्टाइन को अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये देखिए आइंस्टाइन. अच्छा, वो आइंस्टाइन जो था वॉज अपसेट बाय द पब्लिक्स व्यू ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, जो उसके लाइफ का काम, जो उसने अपना अचीवमेंट थी उसकी उसकी काम किया था, लोगों के व्यू से वो काफ़ी अपसेट था. तो हम देखते हैं जी कहीं पे वो अपसेट है. हाँ जी, ये he thought that they let him in because of high physics and math. He struggled at the work initially. ये देखें, वो शुरू में ही struggled at the work initially, शुरू में तो उसने अपने काम में जो थे वो स्ट्रगल की, बट ही केप्ट प्लगिंग अवे एंड इवेंचुअली रीड्रोट, लेकिन वो निकलता गया आगे, और उसने जो न्यूटन के मैकेनिक्स के लॉ थे उनको री राइट किया, ही री रोट, ओके, विद हिज थियरी ऑफ रिलेटिव, बट इंफॉर्मेशन इज नॉट मैचिंग. Einstein was upset by the public's views. Nowhere mentioned that he was upset by the public's view. Nowhere mentioned. And let me check more if there's any other place where this information is given. So you can see Einstein is here at the last paragraph. Let us end with Einstein, the epitome of the genius. He was the genius of genius. He clearly had curiosity, character, determination. He struggled against rejection. Now you can say he struggled against rejection in early life, but was undated. He struggled
against rejection in early life, but was dated. Okay, but he nowhere did he think he was a genius or even gifted. Nowhere mentioned that he was upset by the public's view. That's why it is considered at not given. It is not given. Einstein put his success down to the speed at which he dealt with the scientific question. He usually sorry, वो अपनी जो कामयाबी है उसको अपनी स्पीड के साथ मुंसलिक करता है कि जिस तरह वो साइंटिफिक क्वेश्चंस के साथ वो डील करता है, तो वो इससे मिलने वाली कामयाबी को अपनी स्पीड के साथ, क्योंकि वो साइंटिफिक क्वेश्चन को बहुत स्पीड के साथ वो हल करता है, तो वो अपनी इस क्यूरियोसिटी को स्पीड के साथ मुंसलिक करता है. Did he think he was a genius or even gifted? He once wrote, okay, see, he once wrote, it is not that I am so smart. He himself says that he was not so smart. It is just I stay with the problem. He is steadfast. Okay, he stay with the problem. Okay, he doesn't run away from the problem. Most people say it is the intellect which makes a great scientist. He himself says that some people says it is the intellect which make him a great scientist. They are wrong. It is the character. It is the character, not the speed. It is the character, not the speed. So it is contradicting. So it is contradicting or no? It is contradicting. Okay, so that's why it is no. Einstein put his success down to the speed. It was not because of speed that he dealt with the scientific question, but with the character. But with the character. Let's move toward the next question, 38 to 40. What does I believe? No, this is a keyword. Is needed for children to equal gifted standard. What does I believe is needed? According to IR, what is needed for children to equal gifted standard? Okay, how to bring them equal to uh, gifted standard. Okay, now we'll check first of all IR. Okay, where is IR? See this one. According to my colleague Professor Iyer, there is, okay, with whom I have collaborated on the book, with whom supported on the book, and the name of that book was Great Minds and How to Grow Them. Okay, the latest neuroscience and psychological research suggests most individuals can reach level of performance associated in school with the gifted. जी अंडरस्टैंड कि रिसर्च कहती है कि मोस्ट इंडिविजुअल कैन रीच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो उस लेवल की परफॉर्मेंस पर पहुंच सकते हैं एसोसिएटेड इन स्कूल विद द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड, उन लोगों के साथ जो गिफ्टेड हैं और टैलेंटेड है. ठीक है जी. तो ये कहता है कि इंडिविजुअल जो हैं वो स्कूल में उस परफॉर्मेंस को पहुंच सकते हैं जो परफॉर्मेंस गिफ्टेड और टैलेंटेड जो है वो शो कर रहे हैं. हाउएवर दे मस्ट बी टॉट, तो हम बच्चों को सिखाना चाहिए राइट एटीट्यूड, approaches to their learnings, how they should learn, right attitude, and develop the attributes of his performers. Okay, curiosity, persistence. Okay, they taught them curiosity, persistence, and hard work. For example, an approach I calls high performance learning. Critically, they need the right support in developing these approaches at home as well as at school. So now you see we check all this. Okay, now you see this one. Okay, what does I believe is needed for children to equal gift standard? Strict discipline. Do you see anywhere strict discipline? No, nowhere. Okay, assistance from their peers. Assistance from their peers. क्या उनके जो दोस्त हैं उनसे कोई उनको हेल्प की यहाँ पे बात की गई है? इन द क्लासरूम कहीं पे भी बात नहीं की गई. ये द डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरीज. यस, the development of the spirit of inquiries toward their studies. Okay, this thing, okay, we'll keep it on hold. The determination to surpass everyone. क्या कहीं पे है कि दूसरों को सरपास कर जाना, दूसरों से आगे निकल जाना? द डिटर्मिनेशन, उसका कोई डिटर्मिनेशन की कहीं पे भी बात नहीं हुई.
तो ये है द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी टुवर्ड्स देयर स्टडीज। तो हमारे पास द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। अब यहाँ पे देख लें डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी टुवर्ड्स देयर स्टडीज। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं जी। यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा था ये डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो ये देख लें यहाँ पे रिसर्च मोस्ट इंडिविजुअल कैन रीच लेवल ऑफ, ठीक है जी, परफॉर्मेंस एसोसिएटेड गिफ्टेड, हाउएवर दे मस्ट बी टॉट, उनको पढ़ाना चाहिए राइट, क्या राइट एटीट्यूड, क्या दे देयर लर्निंग एंड डेवलप द एट्रीब्यूट्स, उनमें एट्रीब्यूट्स जो हैं खूबियां जो हैं वो पैदा करनी चाहिए। हाई परफॉर्मर्स की क्यूरोसिटी उनमें होनी चाहिए, क्यूरोसिटी, ठीक है जी। तो क्या है इंक्वायरी, कहाँ चला गया जी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो वो क्या करें जी, वो सीखें हाई परफॉर्मर्स की से क्यूरोसिटी सीखें, परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क सीखें, ठीक है जी। तो फिर क्या है अप्रोच है एक आयर, उसको कहता है हाई परफॉर्मेंस लर्निंग। क्रिटिकली दे नीड द राइट सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए। डेवलपिंग दोज अप्रोचेज, ये अप्रोचेज उनमें डेवलप करनी चाहिए, ठीक है जी। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है जी। ये जो अप्रोचेस हैं ये डेवलप करनी चाहिए होम में या स्कूल में। तो ये आप देख रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एरिक्सन रिसर्च। एरिक्सन की रिसर्च जो है उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है जी। हम देखते हैं जी, ये एरिक्सन है हमारे पास, ये इजी है आपको ढूंढना ये वाला, चूंकि ये कैपिटल लेटर्स में दिए होते हैं। An eminent education psychologist of Florida State of University US in the co-author of Peak, अच्छा जी, वो आफ्टर रिसर्च गोइंग बैक टू 1980 इन डाइवर्स अचीवमेंट्स, ओके, जब डाइवर्स अचीवमेंट्स हो गई हैं म्यूजिक टू मेमोरी टू सपोर्ट, जब इसमें मुख्तलिफ अचीवमेंट्स हो गई हैं इस रिसर्च में, ही डज नॉट थिंक यूनिक एंड इनेट स्टूडेंट्स एट द हार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। तो उसका ख्याल है कि जो यूनिक और इनेट गिफ्टेड टैलेंट्स हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, ठीक है जी। डेलिब्रेट प्रैक्टिस दैट स्ट्रेचेज यू एवरी स्टेप ऑफ द वे एंड अराउंड 10,000 आवर्स ऑफ इट। अगर आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं, तो 10,000 आवर्स जो हैं इसके इज व्हाट प्रोड्यूसेस द गुड, ये कोई बेहतरी पैदा कर सकती है। इट्स नॉट अ मैजिकल नंबर, इसके बारे में भी वो कहता है कि ये कोई मैजिकल नंबर नहीं है कि इससे भी आएगा। द हाईएस्ट परफॉर्मेंस मूव ऑन डूइंग टू होल अ लॉट मोर, तो हाई परफॉर्मेंस वाले इससे भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। एरिक्सन मेमोरी रिसर्च इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज रैंडम स्टूडेंट्स ट्रेंड इन मेमोरी टेक्निक, रैंडम स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है मेमोरी टेक्निक्स के एतबार से पढ़ाई में। वेंट ऑन टू आउट परफॉर्म्स अदर, वो दूसरों को भी आउट परफॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ देखने वाली ये बात है कि रैंडम स्टूडेंट्स को जब ट्रेन किया जाता है मेमोरी टेक्निक के एतबार से पढ़ाई में, तो वो दूसरों को भी जो गिफ्टेड है उनको भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उनको भी आगे निकल जाते हैं, ठीक है। थॉट टू हैव इनेटली सुपीरियर मेमोरीज, उनसे जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो बाय बर्थ सुपीरियर मेमोरीज होती हैं। तो हम देख लें जी, ये What is the result of Erickson research? Very gifted students do not need to work on improving memory skill. कहीं पे भी नहीं लिखा कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी मेमोरी स्किल जो है वो उसको इम्प्रूव करें। अब देख सकते हैं कि कहीं पे भी नहीं लिखा। बीइंग बॉर्न विद स्पेशल गिफ्ट इज नॉट द की फैक्टर्स, जी बिल्कुल सही, यही तो वो बात करता है कि अगर पैदा हो गए अब स्पेशल, बीइंग बॉर्न विद द स्पेशल गिफ्ट, अब गिफ्टेड स्टूडेंट पैदा हो गया ना, इज नॉट द की फैक्टर, तो ये कोई की फैक्टर नहीं है कि आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी वो कहता है, ये देखें, he does not think unique and innate talents are at the heart of performance, ये देख लें, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वो ये कहता है कि अगर टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक्स जो हैं वो सिखाई जाएं तो ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं, ये आउट परफॉर्म करते हैं अदर्स दैट हैव इनेटली सुपीरियर मेमोरीज, वो इनेट सुपीरियर मेमोरीज को वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उनसे आगे निकल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इंक्लूडिंग टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, अ क्रूशियल राइजिंग एक्सरसाइज, देख सकते हैं कहीं पे भी कोई एक्सरसाइज का जिक्र तो नहीं है। 10 आवर्स ऑफ रेलिवेंट एंड डिमांडिंग वर्क विल क्रिएट अ जीनियस, वो तो यहाँ पे कहता है कि ये तो मैजिकल नंबर ही नहीं है, ठीक है।
1000 कर सकते हैं, लेकिन ये कोई मैजिकल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द पेन अल्टीमेट पैराग्राफ, पेन अल्टीमेट कहते हैं आखिरी से पहले जो पैराग्राफ है, इट इज स्टेटेड दैट की टू सम डिप्राइव्ड स्टूडेंट सक्सेस, कि वो लोग जो डिप्राइव्ड होते हैं, जो डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है, वो डिप्राइव्ड, इट इज स्टेटेड कि उनकी द की टू सम डिप्राइव्ड स्टूडेंट सक्सेस, डिप्राइव्ड स्टूडेंट की सक्सेस जो है उसकी की क्या है उसकी, ठीक है जी, वजह क्या है, मेन वजह क्या है। तो हम देखते हैं जी डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो, ये लास्ट है पैराग्राफ, आप देख लें, ये लास्ट पैराग्राफ है। इससे पहला पैराग्राफ जो होगा वो हमारे पास ये हमारे पेनल्टीमेट होगा। Ayer says we know how high performers learn. From that she has developed a high performance learning approach. उसने एक हाई परफॉर्मिंग लर्निंग अप्रोच जो है उसको डेवलप किया है। शी इज वर्किंग ऑन दिस with a group of school both in Britain and abroad. She is working in Britain and abroad as well on this approach. Some spin-off research which looked in the detail at 24 out of 300 children. He selected 24 out of 3000 children for detail, being studied who were succeeding despite difficult circumstances, and these 24 out of 3000 students were succeeding out of difficult background, difficult circumstances. Found something remarkable. Half were getting free school meals, half of them were getting free food from school because of poverty, because they were poor. More than half were living with the single parents, half were living with the single parents. It means they were living either with their mother or father, and 4 and 5 were living in disadvantaged area, and 4 or 5 with the disadvantaged area where there are not good facilities available. Interviews uncovered, इस इंटरव्यूज ने बताया है स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एन एडल्ट और एडल्ट्स, ये जो इंटरव्यूज हुए हैं उन्होंने बताया है, प्रूफ दिया है कि एडल्ट्स या एक एडल्ट या ज़्यादा एडल्ट जो हैं इन चाइल्ड्स लाइफ हु वैल्यूड एंड सपोर्टेड एजुकेशन, जिन्होंने बच्चे की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा किया, एजुकेशन को सपोर्ट किया, आइदर इन द इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिली, या इमीडिएट या एक्सटेंडेड फैमिली में, और इन द चाइल्ड्स वाइडर कम्युनिटी, या चाइल्ड के वाइडर कम्युनिटी में। Children talked about the need to work hard at school, to listen in class and keep trying. Okay जी, हम देखते हैं in the penultimate it stated the key to some deprived children's success. What was the key in the success of the deprived children? Regular and nourishing diet at home. होम पे तो उनको डाइट दी नहीं जाती थी बल्कि स्कूल में दी जाती थी, ऐसे ही है ना जी, तो ये नहीं होगी ऑप्शन। दी लविंग सपोर्ट ऑफ मोर देन वन पेरेंट, मोर देन वन पेरेंट की तो कहीं लिखा ही नहीं था, यहाँ पे मोर देन वन पेरेंट जो है वो उसकी सपोर्ट होगी, ठीक है जी, ठीक है, वन पेरेंट की बात वो कर रहा था। A community which has funded facilities for learning, आप देख ली, इसकी भी कोई बात नहीं। द गाइडेंस ऑफ समवन हु रिकॉग्नाइजेज द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग, द गाइडेंस ऑफ समवन, ठीक है जी, द गाइडेंस ऑफ समवन, समवन हु रिकॉग्नाइजेज द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग। तो आप देख लें, यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। इंटरव्यूज अनकवर्ड स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ एडल्ट्स एंड एडल्ट्स चाइल्ड लाइफ हु वैल्यूड एंड सपोर्टेड द एजुकेशन, ठीक है जी, इवन दो इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिली इन द वाइडर चिल्ड्रंस कम्युनिटी। तो आप देख सकते हैं एडल्ट्स जो हैं, जो भी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वही रीज़न है इसकी। और द गाइडेंस ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है जी, द गाइडेंस ऑफ द समवन एडल्ट्स की गाइडेंस जो है ना वो रिकॉग्नाइजेज द बेनिफिशियल लर्निंग। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो आ रही है, ये ठीक है जी, हमारे पास सी ऑप्शन आ रही है। तो ये था हमारे पास एन इंक्वायरी इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है जी, ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।